Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Chess Smarter. Today we are going to understand the role and function of punctuation marks in the English language. So let's go. First we discuss that what is punctuation. So what is punctuation? Punctuation is crucial because it clarifies the meaning of written text by indicating pauses, stops and the structure of sentences. Proper punctuation helps to avoid confusion, ensures clear communication, and improves readability, making it easier for readers to understand the writer's intent. So, first punctuation is the period. So, what is the period? A full stop is also known as a period. Is chiefly used to end the sentence. यानी कि जो जुमला ख़त्म होने के बाद लगाई जाती है इसको ख़त्म की अलामत भी कहा जाता है। यहाँ ठहरना चाहिए क्योंकि जुमला यहाँ पर मुकम्मल हो रहा होता है। It is mostly used at the end of declarative sentences and imperative sentences. A full stop marks a longer pause than a comma and a semicolon. For example, I asked her whether she could tell me the way to Brighton. यहाँ पर जुमला ख़त्म हो रहा है। जहाँ पे आपकी एक बात ख़त्म हो जाए, जहाँ पे आपका एक सेंटेंस ख़त्म हो जाए, इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। So next we have the comma. So what is the comma? A comma is a mark is used in writing to separate parts of a sentence, showing a slight pause or to separate the various single items in a list. In Urdu, we say that वक्फा या सक्ता की अलामत, इसे वक्फा खफीफ भी कहते हैं। यह अलामत जुमले में अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। जहाँ ये इस्तेमाल हो वहाँ ठहरना चाहिए। For example, after talks break down, relations between the two countries become even more strained. There is a two sentence, there is a two talks. यहाँ दो बातें हो रही हैं जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कोमा यूज़ हो रहा है। यानी कि कोमा वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ एक से ज़्यादा बातें की जा रही हों या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया जा रहा हो। So next we have the question mark. So what is the question mark? A question mark is placed at the end of a sentence which is a direct question. इसे उर्दू में इस्तिफ़हाम की अलामत कहा जाता है, यानी सवालिया जुमले की अलामत। जहाँ आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाए, जहाँ आपसे सवाल किया जाए, वहाँ ये अलामत लगाई जाती है। For example, what is the capital of Wales? Does anyone have a pen I can borrow? So यहाँ पर हम आपसे पूछ रहा है, तो जहाँ पे आपसे कोई भी सवाल किया जाए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज़ किया जाता है। So I hope that you understand this. So next we have the exclamation mark. What is the exclamation mark? The exclamation mark is used to end a sentence expressing strong emotions or commands, and may be used to close questions that are meant to convey extreme emotions. In Urdu, we say that ताज्जुब, निदा, खुशी, गम, ख्वाहिश, तंबी या शाबाश की अलामत को कहा जाता है। ये अलामत अमूमन तासुरात या कैफियत के इजहार में इस्तेमाल होती है। For example, what a lovely view you have here. That's fantastic. यानी कोई भी आपको कोई न्यूज़ दी जा रही हो या कोई भी आप पे सडन कोई शॉक न्यूज़ दी जा रही हो तो वहाँ पर आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। Next we have the quotation mark. So what is the quotation mark? The quotation mark is a symbol, is a type of punctuation used for setting words and passages apart from the rest of the text.
In Urdu we say that वावेन की अलामत, किसी की बात या कॉल को इस अलामत से नुमाया किया जाता है, यानी कोई भी खास बात की जा रही हो उसे इस अलामत से नुमाया किया जाता है. For example, the girls answered her mother by saying, I don't want to go alone. She appeared to be shivering from the cold. So now we conclude the punctuation marks. So how I can conclude this? In conclusion, I say that punctuation is essential for clear and effective communication. It helps to convey the intended meaning, prevent ambiguity, and enhances the readability of text. Proper use of punctuation ensures that messages are understood as intended and improves overall comprehension. I hope that you understand this video. If you have any query, so please comment me. Please like, share, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thanks.